भाइयों और बहनों, 70वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर की जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। इस दिन हम उन राष्ट्र निर्माताओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमें एक ऐसा संविधान दिया जो आज़ादी, समानता और न्याय को यकीनी बनाता है। इस दिन पर मैं अपने सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अनथक कार्य कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार इस राज्य की शांति और सद्भावना को बाधित करने के लिए आतंकवादियों की मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश बार बार हो रहे युद्ध विराम उल्लंघनों ने सीमावर्ती लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। सरकार इन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है। दुर्गम क्षेत्रों, जलवायु और अन्य चुनौतियों के बावजूद सशस्त्र और सुरक्षा बल हमारी सीमाओं पर लगातार कड़ी चौकसी और सतर्कता बनाए रखते हैं। हमारे सशस्त्र और पुलिस बलों ने एक साल में सबसे बड़ी संख्या में आतंकवादियों को बेअसर करने के प्रभावी अभियान चलाए हैं। हमारे जवान राज्य में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हम सेना और पुलिस के बहादुर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। राष्ट्र उनका ऋणी है। हमारी संपूर्ण संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इन शहीदों के परिवारों के साथ हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करें। हमारा दिल उन नागरिकों के परिवारों के प्रति भी भर जाता है जिन्होंने हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है। 1947 में मिली आज़ादी के बाद से हम संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तेजी से अग्रसर हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना, सरकार के संसदीय स्वरूप की सफलता, कानून प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संस्थानों में विश्वास स्वतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसने संशयवादियों को न केवल गलत साबित किया है बल्कि हैरान भी किया है। इन उपलब्धियों की विशिष्टता इस बात में पोशीदा है कि आज़ादी के बाद हर सरकार में बदलाव चुनाव के आधार पर ही हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना और शासन व्यवस्था में सुधार करना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। हाल ही में जिस तरह लोगों ने पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शांति और विकास के प्रति लोगों के विश्वास को दिखाता है। कड़ी चुनौतियों के बावजूद ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चुनाव में बढ़कर भागीदारी के लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए मैं पूरे सिविल और पुलिस प्रशासन को भी बधाई देता हूं। भ्रष्टाचार एक विकट समस्या है जिसका हम सभी को सबसे अधिक ठोस, सामंजस्यपूर्ण और निर्धारित तरीके से सामना करना होगा। इस खतरे से अच्छी तरह तभी लड़ा जा सकता है जब निवारक के रूप में काम करने वाला एक उपयुक्त संस्थागत ढांचा खड़ा किया जाए। राज्य में पहली बार एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना की गई है। एसीबी की स्थापना मिशन गुड गवर्नेंस और गुड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसे और अधिक जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर विजिलेंस कमीशन एक्ट में संशोधन किया गया है। हमने इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट में भी संशोधन किया है। नागरिकों की शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता दी गई है। स्टेट ग्रीवेंस सेल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस सेल का भी गठन किया गया है। मेरे सलाहकार और मुख्य सचिव नियमित रूप से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए सर्विस ग्रीवेंस सेल का भी गठन किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर
पदोन्नति, एसपीओ के लिए मानदेय में वृद्धि, हिंसा और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे जाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों, एसपीओ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सैनिकों के परिजनों को राहत राशि तथा हार्डशिप अलाउंस में वृद्धि शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू और कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिनमें उन्हें अधिक सशक्त बनाया गया है। ये संशोधन पंचायतों को अपने लिए समुचित राजस्व पैदा करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से परिभाषित कराधान संबंधी निर्णय लेने के अधिकार देता है। पंचायतों को 21 विभागों के काम और अधिकार दिए गए हैं। अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में विकास गतिविधियों के लिए पंचायतों को हर साल 2300 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों को हर साल 1200 करोड़ रुपए विकास निधि के रूप में दिए जाएंगे। विकास के अवरोध को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के लिए बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जेरे तकमील है। इस पैकेज में राज्य भर के विभिन्न दुश्वार क्षेत्रों में भारत सरकार का सहयोग शामिल है। ये राज्य की शांति, समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगा। धन की कमी से राज्य में कई ढांचागत परियोजनाएं रुक गई थीं। इनमें से कुछ 5 वर्षों से अधिक समय से अटकी पड़ी थीं। इन परियोजनाओं को पूरा करने में इस देरी ने लोगों को समय पर आवश्यक मूलभूत ढांचे और सेवाओं से वंचित रखा था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन किया है। इसके विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए का लोन लेने का अधिकार दिया गया है। अब तक 3631 करोड़ रुपए के निवेश से प्रमुख क्षेत्रों में 1644 अधूरी पड़ी हुई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं अगले 18 महीने में पूरी हो जाएंगी और राज्य की विकास आवश्यकताओं को गति प्रदान करेंगी। कठुआ में 1220 मीटर कीडिया मंडीवाल पुल का निर्माण अंतर्राज्य सड़क संपर्क क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू और श्रीनगर रिंग रोड बनाने के लिए जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत, जिसको सौभाग्य भी कहते हैं, अपने जोरदार प्रयासों से 100% घरों में निर्धारित समय से पहले बिजली पहुंचाई है। हम सभी पंजीकृत बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे 7 दिन बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 90% से ज्यादा परियोजनाओं को आवंटित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पन बिजली की व्यापक क्षमता है। पिछले 5 वर्षों से लटकी हुई रटले पन बिजली परियोजनाओं को भारत सरकार के साथ साझे कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई है। 850 मेगावाट की ये बिजली परियोजना राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी। 4708 करोड़ 60 लाख रुपए की 626 मेगावाट कीरूपन बिजली योजना को संयुक्त उपक्रम में पूरा करने की मंजूरी दी गई है। ये परियोजना ऊर्जा तथा रोजगार सृजन में कई मायनों में लाभकारी होगी। 220 किलोवाट श्रीनगर कारगिल लेह ट्रांसमिशन लाइन को चालू करके लद्दाख खित्ते को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा गया है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर 40 साल से अटकी हुई शाहपुर कंडी बांध परियोजना को बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के पूरा होने से सांबा और कठुआ जिले में 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी और इसके अलावा रियासत को इस योजना से 20% बिजली प्राप्त होगी। 5850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्ज मल्टीपर्पज योजना प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से कठुआ जिले की 31,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 186 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। सरकार हर खित्ते के लोगों की उम्मीदों के प्रति संवेदनशील है। लद्दाख में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है।
इस एक्ट को अधिसूचित कर काफी देर से की जा रही मांग को पूरा किया गया है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को अधिक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया गया है। रियासत के मखसूस इलाकों की जरूरतों के मुताबिक 40 नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। रियासत के बाहर मुख्य शहरों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। शिक्षकों की मल्टीपल टीचिंग कैडर सहित अन्य मसलों को हल करने के लिए सरकार ने सभी कैडरों को एक ही कैडर में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। ये कदम रियासत में मेयारी तालीम देने में मददगार साबित होगा। हमने एक कार्य योजना तैयार की है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक विद्यालय को शौचालय, पीने का पानी, चार दीवारी, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप और फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा। सरकार रियासत में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 6 लाख परिवारों के 30 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के तहत सरकार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक वार्षिक बीमा कवर के साथ भारत भर में सूचीबद्ध किसी भी दूसरे और तीसरे दर्जे के अस्पताल में कागज रहित और बिना नकदी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत हम पहले ही 12 लाख लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड तेजी से जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संपूर्ण सेहत संबंधी सेवाओं की बेहतर पहचान है और हम ऐसी उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, कठुआ और डोडा में बनाए जाने वाले 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए भारत सरकार ने 260 करोड़ रुपए दिए हैं। अब तक इन कॉलेजों के लिए कुल 765 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन कॉलेजों के लिए 4300 चिकित्सा और परा चिकित्सा स्टाफ की भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इन 5 कॉलेजों में एमबीबीएस के पहले बैच की कक्षाएं इस साल जून माह से शुरू होंगी। दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ इन 5 नए कॉलेजों के खुलने से एमबीबीएस सीटों की संख्या दुगनी हो जाएगी और राज्य भर में स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि होगी। बांदीपुरा, गांदरबल, शोपियां, सांबा और रियासी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। ये बहुत संतोष की बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत कुपवाड़ा और बारामूला जिले ने पिछले 5 महीनों के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित विभिन्न विकासात्मक मापदंडों पर उल्लेखनीय प्रगति करने का गौरव हासिल किया है और उनकी रैंकिंग में सुधार सराहनीय है। मुझे साझा करने में खुशी हो रही है कि सितंबर 2008 के दौरान जम्मू कश्मीर को खुले शौच में मुक्त घोषित किया गया है। पूरे राज्य में 10 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। चिन्हित क्षेत्रों में उद्यमशीलता का माहौल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर स्टार्टअप नीति तैयार की गई है। ये नीति युवा उद्यमियों को आकर्षक और खोजपूर्ण स्टार्टअप के लिए प्रेरित करेगी। सरकार ने अब तक की पहली व्यापार और निर्यात नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य अगले 10 साल में घरेलू व्यापार को 5 गुना बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर को निवेश प्रिय बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रक्रिया को बदलकर राज्य में व्यापार में सुगमता लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेशन एक्ट 2018 को मंजूरी दी गई है। निवेशकों और उद्यमियों को विभिन्न विभागों से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा अधिसूचित 23 नई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। बागबानी राज्य को 35 से 40% कृषि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है। ये पोषण, सुरक्षा और कृषि रोजगार में योगदान देकर हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हालांकि फसल कटाई के बाद की टेक्नोलॉजी की कमी है, अपर्याप्त भंडारण और प्रोसेसिंग क्षमता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है।
इसकी विशाल क्षमता को देखते हुए निजी क्षेत्र में वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए एक ब्याज निवारण योजना स्वीकृत की गई है। इस योजनाओं के तहत 500 मीट्रिक टन तक क्षमता वाली इकाइयां सब्सिडी के लिए मान्य होंगी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउसेज में अखरोट की नर्सरी स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। पर्यटन हमारे समग्र विकास और रोजगार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार इस क्षेत्र की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। घाटी की स्थिति के बारे में नकारात्मक धारणा से उत्पन्न इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने प्रभावी अभियान शुरू किए हैं। हमारे प्रयासों का असर भी दिखने लगा है। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पहलगांव और गुलमर्ग में होटल लगभग 100% भरे हुए हैं। राज्य पर्यटन विभाग यात्रियों और पर्यटकों की आमद को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। वर्ष 2017 के दौरान श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आने वाले 81,78,000 तीर्थयात्रियों के मुकाबले वर्ष 2018 के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या 85,87,000 थी। इसी तरह अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या 2017 के दौरान 2,60,000 से बढ़कर 18 में 2,85,000 हो गई है। लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अधिक पर्यटक और ट्रैकिंग मार्ग खोलने के हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएमडीपी के तहत राज्य में नई पर्यटन ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य भर में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और आवास मुहैया करके उनकी संख्या में वृद्धि होगी। नवंबर 2018 में असमय बर्फबारी से विशेषकर बागवानी को हुए नुकसान से हम सब वाकिफ हैं। इस बर्फबारी से प्रभावित किसानों के लिए दायमी फसलों जैसे सेब के लिए राहत राशि बढ़ाकर 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। हमने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिलने वाली राहत के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है। देवी और सज्जनों, जम्मू व कश्मीर चुनौतियों और अवसरों से भरे हुए एक बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हमारे युवा आशा और आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। वे एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो उनके जीवन में सफलता, संतुष्टि और खुशियां लाएं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे कुछ युवाओं, जिनमें से कुछ पेशेवर शिक्षा हासिल कर रहे थे, उन्होंने हिंसावादी समूहों से प्रभावित होकर बंदूक। इससे विशेष रूप से घाटी में लोगों की कठिनाई और कष्टों में वृद्धि हुई है। ये हमारी धारणा है कि हिंसा और टकराव हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। बुज़दिलाना तशद्दुद की वजह से कई कीमती और मासूम जानें गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उन शोक संतप्त परिवारों के लिए हमारा दिल भर आता है। हमें शांति को मजबूत करने के लिए अपने खूबसूरत परिदृश्य से हमेशा के लिए हिंसा के ऐसे भद्दे दागों को हटाने के तरीके खोजने होंगे। इसका निर्वहन हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है और लोगों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के साथ ही इसका समाधान किया जा सकता है। रचनात्मक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं की ऊर्जा का उचित प्रयोग करने के लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास और इसे बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। एमए स्टेडियम जम्मू को 42 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेड किया जा रहा है और अप्रैल 2019 तक ये पूरा हो जाएगा। अब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी कर सकेगा। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को भी 44 करोड़ की लागत से फीफा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है और ये जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों की मेजबानी कर सकता है। इस अवसर पर मैं सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दलों, राज्य के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य संगठनों के नेताओं से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और जम्मू कश्मीर को संपन्न बनाने में सहयोग दें, जो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बन सके। मैं एक बार फिर
जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देते हुए अपने संबोधन को समाप्त करता हूं और राज्य में विकास तथा शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपने सलाहकारों, मुख्य सचिव और सिविल तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार नहीं बनती है। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि सरकार गुड गवर्नेंस और मिशन डिलीवरिंग डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करती रहेगी। जय हिंद। On this joyous 17th Republic Day, I extend warm greetings to the people of Jammu and Kashmir. On this day, we remember and pay tributes to the founding fathers of the nation who fought for our freedom and handed over to us a constitution that guarantees liberty, equality, and justice. On this special day, I convey my greetings and sincere gratitude to members of our armed forces and J&K police for working tirelessly in maintaining the unity and integrity of the nation. Our neighboring country continues to support terrorists to disturb peace and harmony in the state. There have been repeated attempts to infiltrate terrorists across the international border and line of control. Repeated ceasefire violations have brought untold hardship to people living in the villages along the borders. Government is taking required measures to alleviate the sufferings of the border population. Notwithstanding the tough terrain, climate, and other challenges, our armed forces and security forces continue to maintain strict vigil and alertness on our frontiers. Armed forces and police forces carried out effective operations to neutralize the largest ever number of terrorists in a year. Our Jawans have been working in extremely difficult circumstances in the state. We salute the brave army and police Jawans who have offered supreme sacrifices for maintaining peace and tranquility in Jammu and Kashmir. The nation remains indebted to them. All our thoughts and prayers are with the families of such martyrs, and it is incumbent upon us all to bring joy in their lives. Our hearts also go out to the families of the civilians who lost their loved ones in the wanton violence. Since independence in 1947, we have made rapid strides towards meeting the principles enshrined in our constitution, depending on democracy, success of parliamentary form of government, rule of law, and people's faith in democratic process and institutions are the biggest achievements of independent India, which have not only proved the skeptics wrong but surprised many. The uniqueness of this achievement lies in the fact that every successive change of the government since independence has been only through the ballot. Deepening of democratic process and improving the quality of governance have been the prime focus of the government. The huge turnout in the recently concluded Panchayat and municipal elections in the state is an indicator of the people's yearning for peace and development. Despite stiff challenges, these elections were conducted in a peaceful atmosphere thanks to the overwhelming participation of the people. I congratulate the entire civil and police administration for having worked overtime to ensure successful and peaceful Panchayat and municipal elections across the state. Corruption is a threat that we all need to counter the most concerted, cohesive, and determined manner. This menace can be best fought when there is an appropriate institutional framework in place to act as a deterrent. The first ever Anti-Corruption Bureau has been established in the state. The establishment of ACB is one of the important elements of the mission Good Governance and Development. The Jammu and Kashmir Vigilance Commission Act has been amended to make it more vibrant and effective. We have also amended Prevention of Corruption Act
to give it more teeth. Redressal of citizens' grievances has been given priority. The state grievances cell has been constituted apart from the establishment of district grievance cells. My advisors, Chief Secretary, are regularly interacting with public for redressal of their problems. A service grievance cell to address service-related grievances of employees has also been set up. The state government has taken a series of measures for the welfare of police personnel, which included grant of promotions at various levels, enhancement of honorarium for SPOs, enhancement of ex gratia relief of NOKs of J&K police personnel, SPOs, Central Armed Police Forces and Army, killed in violence and militancy related incidents and hardship allowance. Promotions and other service related matters of the government employees are being prioritized. Amendments have been made in the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 to devolve more powers to panchayats. The amendments will ensure well-defined taxation powers to the panchayat for generation of adequate resources by themselves. Powers and functions of 21 departments have been devolved to the panchayats. Over rupees 2,300 crore development fund per annum will be transferred to panchayats and rupees 1,200 crore to the urban local bodies for undertaking various development activities in the restrictive areas of their jurisdiction, with the object of addressing the state's backlog in development. The massive 80,000 crore Prime Minister's development package for the state is under implementation. The package includes the Government of India's support to various critical sectors and will ensure peace, prosperity and development in the state. The paucity of funds had stalled the completion of many infrastructural projects in the state, some of which have been languishing for more than 5 years. This delay in completion of these projects have deprived the people of legitimately required essential infrastructure and services in time. To address this problem, the government has constituted the Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation and authorized it to raise rupees 8,000 crore loan for development. Till date, 1,644 languishing projects in key sectors with an investment of rupees 3,631 crore have been approved. These projects would be completed in next 18 months and bring a much needed impetus to the development requirements of the state. One of the major achievements in interstate connectivity has been achieved through completion of 1,210 meter span pre-stressed bridge at Kiriyan, Gandial, Kathua. Land has been handed over to the National Highway Authority of India Limited for Jammu and Srinagar ring roads. Work on these projects has commenced. Through its strenuous effort, the government has been able to provide last mile connectivity to unelectrified households and achieve 100% household electrification in the month of October last year under the Prime Minister Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, which is known as Saubhagya. Much before the target date, we are committed to provide 24 hours, 7 days electricity to all registered electricity consumers. Work has been allotted for more than 90% of projects costing over rupees 7,000 crore for upgradation of power infrastructure in the state under various flagship schemes. Jammu and Kashmir has vast hydropower potential. Ratle hydroelectric project pending for last 5 years has been cleared for implementation through a joint venture with Government of India. This 850 megawatt per project will give further push to the energy sector in the state. The 624 megawatt Kiru HEP at a cost of rupees 4,708
3.60 crore has been approved for execution through joint venture. The project offers multiple benefits in terms of power and employment generation. Ladakh region has been brought on national grid by completing 220 kilowatt Srinagar-Kargil-Leh transmission line. It is heartening to note the government has signed the Memorandum of Understanding with the Government of Punjab for execution of Shahpur Kandi Dam project, which was in limbo for the last 40 years. Execution of this project will give a much needed boost to the agricultural activity by irrigating over 32,000 hectares of land in Samba and Kathua district. Besides, the state will get 20% power from this project. Uj multi-purpose project has been cleared for execution at the cost of rupees 5,850 crores. The project will irrigate another 31,000 hectares of land in Kathua district and will generate 186 megawatt power. The government is sensitive to regional aspirations. A university at Ladakh has been created and the act notified to fulfill the long pending demand of the region. Amendments have been made in the relevant act to devolve more powers and privileges to the Ladakh Autonomous Hill Development Council. 40 new degree colleges are being opened across the state to meet area-specific requirements. To address the grievances of our students studying outside the state in major cities, liaison officers have been designated. To address the issues of teaching community, including existence of multiple teaching cadres, the government has decided to merge these cadres into a single cadre. This measure will help to promote quality education in the state. We have drawn an action plan to provide each school in the state with toilet, drinking water, boundary wall, ramps for specially able children and furniture facilities. The government is committed to providing access to affordable health care in the state. More than 6 lakh families with 30 lakh individuals in the state are being covered under Ayushman Bharat scheme. The scheme will provide paperless and cashless health care service in any empaneled hospital across India with an insurance cover of up to 5 lakh per family per year in secondary and tertiary care hospitals. We have already registered 12 lakh beneficiaries under the scheme. The state became the second fastest issuer of Ayushman Bharat Gold Card in the country. Our performance in the overall health indicators is also being constantly recognized at the national level. We are committed to sustain and build upon the achievements registered so far. Rupees 260 crore have been released recently by the Government of India for 5 new medical colleges at Anantnag, Baramulla, Doda, Kathua and Rajouri, taking cumulative release till date for these colleges to rupees 765 crore. Selection process for recruitment of 4,300 medicos and paramedical staff for these colleges have been fast-tracked. Classes for first batch of MBBS at 5 new medical colleges will start from June this year. Apart from access to tertiary health care in the remote areas, 100% increase in the number of MBBS seats in the state with the addition of these 5 new colleges will augment the healthcare across the state. 5 sub-district hospitals at Bandipora, Gandarbal, Shopian, Samba and Riasi have also been upgraded as district hospitals. It is a matter of great satisfaction that Kupwara and Baramulla districts have achieved distinction in making remarkable progress under various developmental parameters, including health, education and agriculture under the Transformation Aspirational District Program during the past 5 months.
The improvement in their ranking is commendable. I am glad to share that Jammu and Kashmir has been declared open defecation-free ODF during September 2018. More than 1 million toilets have been constructed across the state. Emphasis is being laid on creating an environmental entrepreneurship in identified sectors. To facilitate and nurture the growth of a startup in the state, Jammu and Kashmir startup policy has been rolled out. The policy will inspire young entrepreneurs to create vibrant and innovative startups. The government has rolled out first ever trade and export policy. The policy is aimed at enhancing domestic trade volume by 5 times in next 10 years. Concrete steps are being taken to make J&K investment friendly. Jammu and Kashmir Single Window Industrial Investment and Business Facilitation Act 2018 has been enacted to facilitate overhaul of existing processes and procedures under the Ease of Doing Business Reforms Initiative. A single window portal has been launched for investors and entrepreneurs to facilitate clearances from various departments. 23 new services notified by the Industries and Commerce Department have been made online. Horticulture contributes to 35 to 40% of the state's agriculture GDP and is mainstay of our economy, contributing to the nutritional security and on-farm employment. However, the challenges of poor post-harvest technology and inadequate storage infrastructure and processing capacity remains a concern for which government is taking necessary measures. In view of its huge potential and interest subvention scheme for setting up a walnut processing unit, the private sector has been approved. The units up to 500 metric ton capacity will be eligible for subsidy under the scheme. Similarly, scheme for setting up of walnut nurseries in high-tech poly greenhouses has been approved for private sector. Now, tourism is an important part of overall development and employment strategy. Government is committed to unlock the vast potential in the sector. We have launched a sustained campaign to address the challenges posed to the sector by the negative perception regarding the obtaining situation in the valley. Our efforts have begun to pay dividends, which is evident from the fact that hotels in Pahalgam and Gulmarg are registering almost 100% occupancy during past couple of months. The state tourism development is making concerted effort to encourage the influx of pilgrims and tourists in the state. As against arrival of 81.78 lakh pilgrims to Sri Mata Vaishno Devi Ji during 2017, pilgrim arrival stood at 85.87 lakh during 2018. Similarly, pilgrims for Sri Amarnath Ji Yatra increased from 2.6 lakh to 2.85 lakh in 2018. To promote tourism sector in the Ladakh region, Government of India has approved our proposal to open up more tourist and trekking routes. An additional investment of rupees 2,000 crore has been approved by the Government of India for development of new tourism infrastructure projects in the state under PMDP. The investment will increase the tourist flow to the state by way of providing them better amenities, accommodation across the state. The damages caused by untimely snowfall of November 2018, particular to horticulture crops, are known to all of us. The quantum of relief to farmers affected by the snowfall has been enhanced to 3,600 to rupees 36,000 per hectare for damages to perennial crops like apple. We have also simplified the procedure for disbursement of relief on account of natural calamities. Ladies and gentlemen, Jammu and Kashmir has been passing through a crucial phase, offering challenges and opportunities. Our youth today are brimming with hope and aspiration. They are looking for a path
which will bring success, satisfaction and happiness in their lives. It is a matter of deep anguish that a number of our youth, some of whom were pursuing professional studies, were influenced by extremist ideologies to pick up gun and join groups which perpetrate violence. This has added to the difficulties and sufferings of the people, particularly in the valley. It is our sanguine belief that violence and a confrontationist approach is no antidote to addressing any issue. A number of precious and innocent lives have been lost due to mindless and dastardly violence. As I said earlier, also our hearts go to the bereaved families who have lost their dear ones. We shall have to find ways to remove such ugly scars of violence forever from our beautiful landscape by strengthening the discourse of peace. This is our collective responsibility and can be discharged only with active cooperation and support of our people. In order to channelize the energy of the youth in constructive and nation-building activities, the Department of Youth Services and Sports have given focused attention to the development and upgradation of sport infrastructure in the state. MA Stadium Jammu has been upgraded to an international cricket stadium at a cost of 42.17 crore and shall be completed by April 2019. It can now host national and international cricket matches. Bakshi Stadium, Srinagar has been upgraded as a FIFA-compliant international football stadium at a cost of 44 crore. It shall be completed by June 2019. It can host national and international football matches. On this occasion, I appeal to the members of the civil society, political parties, leaders of all social, cultural, religious and other organizations in the state to come forward and lend their hands in building a prosperous Jammu and Kashmir, which will be a role model for other states. I conclude by once again conveying my warm greetings to the people of Jammu and Kashmir and compliment the team of my advisors, Chief Secretary and officers of civil and police administration for ensuring a discernible change on development governance scenario in the state. I assure you all that this process will continue till a democratically elected government is back in the state. I will reassure you that government will continue to work on its mission good governance and mission delivering development. Jai Hind.